था, एक वर्टिकल ऐसे प्रोजेक्शन था। ठीक है। स्टेज पर, ओके। स्टेज पर प्रेजेंटर यहाँ पर है, बताऊंगा कौन है। हाँ। अब यहाँ पर ऑडियंस भी पार्ट है उसका। ठीक और है। यहाँ पर पहला प्रोजेक्टर है जिसपे कि 25 इयर्स की, फर्स्ट 25 इयर्स की हीरोज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। ओके, ओके। ये बात हो रही है। ठीक फिर है। लास्ट 25 के हीरोज का फिर जो आया वो आके एक वहाँ दूसरा वाला प्रोजेक्ट हो गया। एक बड़ा गोल है नहीं घड़ी का वो है प्रोजेक्टर, उस पे जाके रुक गया। ओके नाइस। तो उससे उसके साथ कनेक्टेड था वो। हाँ, उससे ये अलग प्रोजेक्टर है। ओके, ये इसका अलग प्रोजेक्शन दे रहा है। प्रोजेक्टर है। नाइस। ठीक है। फिर दूसरा 25 इयर्स इस पे भी फ्रीज हो गया, जो फिर मेन हीरो जो उसमें से सेलेक्ट किया वो हाँ, फ्रीज हो गया, वो वहाँ कि गया। महात्मा गांधी या जो भी है। हाँ एग्जैक्टली। फिर नेक्स्ट दूसरा चला। ओके। नेक्स्ट थर्ड 25 प्रोजेक्टर इयर्स के बारे में प्रेजेंटर बता भी रहा है सामने। और वहाँ चल रहा है प्रेजेंटर कौन है? आलेख पदमसी, जो कि एडवर्टाइजिंग का गुरु गुरु है। ठीक है, अभी डेथ हुई है। हाँ हाँ दूसरा। हाँ हाँ। तीसरे में फिर तीसरा, फिर चौथा है, फिर पांचवा, उसके बाद चार, उस पे ये चल रहा है। ये बस क्लॉक side कंटिन्यूस में है। एक हाँ, बड़ी स्क्रीन है जिसपे एक करेक्टर, एनिमेटेड करेक्टर इनसे बात कर रहा है। किससे? उनसे जो पदमसी से और ऑडियंस से। ओ वाओ दैट्स ये नाइस। बनाया था हमने 2000 में बना, ठीक है। और एक छत पर चल रहा है वो अलग की पोजीशन है गोल उसका। प्रोजेक्टर, राउंड प्रोजेक्टर। समझ गया। उस समय समझ नहीं आता था राउंड कैसे करो वो वाली हाँ technology ऑब्वियसली, हाँ नहीं सही होती। बात है। तो एक नीचे से वो से रिम दे दिया होगा। राउंड देके वो राउंड उस पे प्रोजेक्शन चल रहा है, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट। ओके ओके ओके। तो मतलब आपने कहाँ किया ये हमने? हाँ। तेरे इसमें हैबिटेट सेंटर में, खुले में। ओ ओके। तो आपको तो वो अच्छा बेसमेंट वाला एरिया है। ऊपर ऊपर जो खुला एरिया है। तो स्काई के लिए क्या किया रेस्टोरेंट आपने? के बाहर और इधर जो साइड पूरा कॉर्नर एरिया में समझ जो गया। हाँ। तो उसका जो एयर वाला शॉट लिया कैसे लिया आपने फिर? ऊपर बनाया था एक डोम बनाया होगा। ओह, तो आपने मतलब नीचे से ये ईयर 2000 में हमने सर्वर लॉन्च किया कि बाद में कहता हीरो ये है, ये सारे HP का हैं। सर्वर। वाओ दैट्स नाइस। तो उसमें लगा भी होगा। ये वो सब पार्ट थी उसका। इसमें पता है एस्पेक्ट्स पे क्या होता है? इसमें क्या होता है कि हमको दिखाना है बस, पैसा नहीं। वो खोल देते हैं अपना ट्यूटोरियल जगह पे, तो बहाओ। नहीं सब, एक भी आपका तेरा प्रोजेक्शन सिंपल नहीं था ना। हाँ हाँ। कोई नॉर्मल स्क्रीन का प्रोजेक्शन ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो नए वे और सब इंटरकनेक्टेड है विद ए सिमुलेटेड सिस्टम। हाँ। सारा टाइमलाइन पे चल रहा है। और उसको आप उसमें कोई डिले लैग कर नहीं कभी सकता। ये खुलेगा, कभी दूसरा प्रोजेक्टर खुलेगा, ये बंद होगा, ये होगा, सारे मल्टी। इसके लिए तो आपके प्रोजेक्शन के लिए आपके कम से कम 2 महीना लगा होगा सिर्फ आपको टेस्टिंग के लिए कि कैसे चल रहा है। कम से कम लगा होगा 1 से 2 महीना। हाँ वो तो वो क्योंकि तब परफेक्टली लाइव आना चाहिए ना उस जगह पे, कहाँ पे ग्लिच आ रहा है कैसा वो। प्रोजेक्शन से बहुत अमेजिंग चीज़ है मतलब। ये तो तुम्हारे से 22 साल में लाइक। हाँ बिल्कुल समझ में आया क्या बात हुई यहाँ पे। प्रोजेक्शन की 3D प्रोजेक्शन बोलते हैं। अनन्या कहाँ गई? पता नहीं सर। जब अच्छी चीज़ होती है तो कोई नहीं बात। पदमसी वाज प्रेजेंटिंग अमेजिंग। वो तो वो लेवल ही अलग है सर उनका। वो लोगों का वो लीग अलग है। मतलब पता है क्या होता है एक्चुअली, देयर इज समथिंग कहते हैं ना वो नूब, प्रो और लेजेंड तो वो वाला हिसाब है। तो द प्रॉब्लम है कि अभी एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या है सर, मतलब मुझे पर्सनली बता अभी इससे क्वेश्चन पूछा मुझसे। ठीक है एक्चुअली विपुल अतुल सर इज हियर टुडे। ठीक है आप लोग जानते हैं अतुल सर को? नहीं सर। अच्छा अतुल सर इज वन ऑफ द लेजेंडरी पर्सन्स फ्रॉम द इंडस्ट्री। ठीक है योगेश सर बात करते हैं ना अतुल सर की, यही सर। ठीक है तो ही हैज बीन इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट यू कैन से 25 to 30 इयर्स। इंडिया का जो पहला गेम बना था वो सर ने बनाया था, पहला गेम। समझ रहे हो सर कौन सा? पंचतंत्र। तो जो बना था पहला सीडी था, सीडी आता था उसका, वो गेम सर ने बनाया था। इंडिया का पहला गेम है वो। ओह ठीक है पंचतंत्र। एंड सर इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 30 इयर्स एंड डूइंग लेजेंडरी प्रोजेक्ट्स। समझ रहे हो बात? तो सर का तुम्हें टाइम मिल रहा है बहुत बड़ी बात है। रियलिटी बता रहा हूँ आज लकी है कि सर हैं यहाँ पे। आज हमें डिस्कशन चल रहा है। इंटरेस्टिंग फील्ड में हो आप लोग, पर बस पैशन और ज्यादा चाहिए और आपके एफर्ट ज्यादा चाहिए। पर पता है सर अच्छा हाँ मैं एक पॉइंट ऐसे काम नहीं चलेगा। इन लोगों ने अभी साहिल ने क्वेश्चन पूछा मुझसे। ठीक है कि सर मुझे ये बताइए कि एक सॉफ्टवेयर सीखने में मुझे कितना टाइम लगेगा परफेक्टली, मैंने बोला लाइफ टाइम। अब प्रॉब्लम पता है क्या है सर, सबसे बड़ी इशू यही आता है कि बच्चे जो है करेंटली जो बच्चा है ना इंडस्ट्री के अंदर, वो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड इतना हो गया है कि वो बेसिक्स ही भूल गया है कि प्रिंसिपल्स ही नहीं पता। सॉफ्टवेयर से टूल है वो, Exactly. सॉफ्टवेयर में फंसो मत। वही चीज़ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, लोग कितना 5% भी यूज नहीं करते, 2% भी यूज नहीं एग्जैक्टली समझ रहे हो? 98% तो अनयूज्ड रह जाता है। उसकी इतनी ज्यादा कैपेबिलिटीज है। फोटोशॉप
लाइफ टाइम क्या, कितने लाइफ टाइम में भी तुम इससे कंप्लीट खत्म नहीं नहीं कर पाओगे। मैं अगर अभी सवाल पूछना शुरू करूँ, एक का जो बेसिक चीजें उनमें से एक का सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली पॉइंट यही है, समझ गए? क्योंकि तुम्हारा अपना पैशन है कि तुम कितना उस पर काम करना चाहते हो। और वो तो इनफाइनाइट है। हाँ। लैंग्वेज कोई भी पहले हम बोलते थे किसी लैंग्वेज सी में सीखने में कितना टाइम लगेगा, जितना हिंदी सीखने में इंग्लिश में कितना टाइम Exactly. लगेगा, लाइफ टाइम। उसके बाद भी आप इनकम्प्लीट रहती है ना। एग्जैक्टली वही तो चीज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस फील्ड में तुम हो ना, मतलब मैं मेरे सेमिनार होते थे, मैं एक वर्ड यूज़ करता था सेमिनार में, यू आर द गॉड ऑफ योर ओन वर्चुअल वर्ल्ड। यस। तो यू आर द गॉड, ये वर्चुअल वर्ल्ड है, इसके तुम भगवान हो। अब ये समझ लो कि भगवान की कितनी पावर है और कब कब खत्म होती है दुनिया। और उसे इतना हल्का मतलब तुम्हें काम ज्यादा करना पड़ेगा, यू आर नॉट स्पेंडिंग सफिशिएंट टाइम। एग्जैक्टली प्रॉब्लम यही है। इसमें और डूबे हुए रहना चाहिए। वही मतलब हमारे पास टाइम होना ही नहीं चाहिए, हमारे पास नहीं दिखाई देना होता। चाहिए अभी तुम लोगों में। तो विश्वास करोगे, हम लोग लंच पे बैठे हुए थे, ठीक है, मतलब मैं फैक्ट बता रहा हूँ, सर विज बिन इंडस्ट्री फ्रॉम 30 ईयर्स, ठीक है, हम लोग अभी भी प्रोजेक्ट के रिगार्ड डिस्कशन कर रहे थे लंच पे बैठ के। सर कुछ बता रहे थे, मैं हम पॉइंट रख रहा था कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, एंड वी आर स्टिल पैशनेट अबाउट द इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि हमको ग्रो करना है, लिमिट नहीं है इस फील्ड की। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम ऐसी फील्ड में हो जिसमें तुम बोल सकता है कि मैं सब कुछ सीख लिया। बस माया जैसे सॉफ्टवेयर है 3D, 3.5 लाख सिर्फ इसमें टूल है, सिर्फ टूल है 3.5 लाख, बाकी छोड़ो। और सब टूल्स कितना है वो तो अलग ही हिसाब है, इसलिए सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, आप कैसे सीखोगे? आपके पास ब्रह्मा जैसी तो पावर है यूनिवर्स क्रिएट करने की, तो वो इनफाइनाइट है ना। एक मछली भी क्रिएट कर सकते हो और एक उसका फिन भी क्रिएट कर सकते हो और यूनिवर्स भी क्रिएट एग्जैक्टली है ना। तो इनफाइनाइट है वो। हाँ, और वो तुम्हें समझना वो फीलिंग है, बिहेवियर है, यानी क्या क्या क्रिएट कर सकते हो। और पता है सर, मतलब सोचो तो सही। मैं जब देखता हूँ ना, मतलब जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट बैठे हुए हैं डिज्नी में, यू वोंट बिलीव, जो 80% स्टाफ है ना वो PhD लेवल पे बैठा हुआ है, द डॉक्टरेट ह्यूमन साइकोलॉजी में। जो एनिमेशन वाला बंदा है वो ह्यूमन साइकोलॉजी करके बैठा हुआ PhD, समझ रहे हो? आप ये समझ के आते हैं एनिमेशन में कि वो सबसे आसान फील्ड है। हाँ, सच बता रहा हूँ। मतलब वो सबसे मुश्किल है, होता है अपना इंटरेस्ट वर्ल्ड की सबसे मुश्किल फील्ड है। आपको फिजिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब आना चाहिए। PhD वाला है, वही तब तो समझ में आएगी। वो मतलब वहाँ तुम बैठे हुए हो, तुम समझो सिम्बा बना रखा है उन्होंने, अभी आई थी लायन किंग, ठीक है, देखो आज लेट्स हैव अ डिस्कशन टुडे। लायन किंग आई थी, वो वहाँ बैठा है लायन और वो एक एक्सप्रेशन दे रहा है। वो एक्सप्रेशन क्यों दे रहा है, उसके पीछे साइकोलॉजी है एक, ऐसी कुछ भी नहीं बना दिया उन लोगों ने कि ऐसे डाल जब वो देंगे। खड़े होके ऐसे घुमा रहा था ना, तो करोड़ों अरबों लोग बस ऐसे ही देख रहे थे उसको कि बनाया कैसे, बनाया कैसे उसने। उस समय ऐसे नहीं था वो शॉट। तो वो बहुत मतलब आप समझो ना उस चीज वो को। एनिमेशन हाँ, इंडस्ट्री इजी लगता है देखने वाले को तो। भैया हाँ, तुमको इजी लगता है, पेरेंट्स को लगता है, तुम्हें नहीं लगेगा, तुम बनाते हो। हाँ हाँ, तुमको लगना चाहिए, तुमको समझना चाहिए वो क्यों बनाया, कैसे बनाया गया है। अब ये समझो, मतलब तुम एक फिल्म थी 2D, मतलब हमारी इसलिए बात हो रही थी, तो एक सीनियर थे इस इंडस्ट्री, कैसे हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो वो कह रहे कि हमने सिम्बा देखी थी, लायन किंग, जब हम यंग थे, ठीक है, और अब हमने दोबारा लायन किंग देखी है, ऐसा फर्क आ गया, मतलब वी कैन नॉट इवन बिलीव दैट कि ऐसा फर्क आ सकता था इंडस्ट्री में। दैट लायन वॉज एक्चुअली डूइंग द रियलिस्टिक एक्सप्रेशंस। एक फिल्म है, मतलब आई शो इट्स अ लेजेंडरी फिल्म, बट इट डिस्ट्रॉयड अ स्टूडियो। उसका नाम था लाइफ ऑफ पाई, देखिए नाम सुना? यस सर। हाँ, उसका पता है, उसको जब ऑस्कर मिला था तो क्या हो रहा था, सबसे बड़ा रिवोल्ट हुआ था एनिमेशन इंडस्ट्री का। नहीं पता होगा तुम लोगों उसके बारे में। उसको ऑस्कर, लाइफ ऑफ पाई देखिए पहले, ये देखिए नहीं, नाम पता है नाम उसका। पता है। देखिए सर। अपना इंडियन एक्टर था उसमें। हाँ। वो क्या नाम था उसका जो उसमें क्या होता है कि एक टाइगर और एक लड़का एक बोट में फंस जाते हैं, तो की दोस्ती हो जाती है आपस में। रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल, जो बहुत एग्रेसिव होता है, ठीक है। अब उस फिल्म को बनाने में क्या हुआ था, देयर वाज अ स्टूडियो कॉल्ड रिदम एंड ह्यूज। रिदम एंड ह्यूज इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टूडियो जो एक्चुअली पिक्सार को टच करने वाला स्टूडियो था VFX में। मतलब उसके पास जो प्रोजेक्ट गया वो, मतलब वो अलग लेजेंडरी लेवल पे बनेगा, उसके वो छोटा कोई था ही नहीं उनके पास। उनका इंफ्रा देखते हैं ना तुम लोग, आई वाज अ पार्ट ऑफ रिदम एंड ह्यूज। मतलब हमको एक एरिया दे रखा था छोटा सा, और उसमें लाइक देयर लैम्प शेड्स एंड एवरीथिंग ब्यूटीफुल। मतलब उसकी फोटो खींचोगे लगोगे यार ये क्या जगह है, मतलब बैठ के मजा आता था, ठीक है, कि अब कहाँ बैठे हुए हैं। देन व्हाट हैपेंड, दिस फिल्म केम, लाइफ ऑफ पाई। दे सेड कि यही फिल्म बन जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम ये हुआ कि जो डायरेक्टर था उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल था वो था ही नहीं। ही वांटेड इन्फिनाइट,
मतलब उसको लेजेंडरी था। तुमने इसमें एक शॉट है, वेल वाला शॉट है एक, उसमें वेल आती है और पूरा आर्क लेकर ना पूरा जंप मार के पानी में घुसती है, ठीक है। वो शॉट 28 बार बना है, 28 टाइम्स बना है वो शॉट अपने आप में। और सबसे बड़ी बात उसकी ये थी कि उस शॉट को बनाने में कम से कम 6 महीने लगता था, एक शॉट को बनाने में। इधर मैं दिखाता हूँ आपको वाला शॉट, आई विल शेयर माय स्क्रीन विद यू। वेल शॉट है वो, और वो यूनिवर्सल शॉट है उसका। ये देखो, ये रहा। निशा रावल अब है लॉकअप में। ये दिख रहा है, ये लिट हो रहा है, सब 3D है, ये जो पानी में लिट हो रहा है। अब इसमें से एक वेल आएगी, ठीक है, और वो पूरा आर्क बनाते हुए पूरा लिट होते, पूरा एटमॉस्फेयर लिट कर दिया था उसमें। पूरी आएगी, देखिएगा, देखिए 1 सेकंड का शॉट है ये, देखो देखिएगा नीचे, ये देखिए अब आना शुरू हो गया, ये ग्लो कर रहा है पानी, ये बहुत 3D है। अब ये देखो, अब यहाँ से दिख रही है वो, ये बनाना शुरू किया। अब ये आई वेल, अब ये आ गई, ये पानी ग्लो कर रहा है, ये सारे पार्टिकल्स है, सारे पार्टिकल्स। अब प्रॉब्लम क्या हुई, इस फिल्म के 80% शॉट्स VFX के 3 बार बनाए, 80% शॉट बनाया, रिजेक्ट हो गया, नहीं ये नहीं ठीक लगा, इसको चेंज करो। सर कंपनी बैंकरप्ट हो गई। जिस फिल्म रिलीज हुई थी उससे 1 महीना पहले रिदम एंड न्यूज़ ने सारे प्रोड्यूसर्स को फायर कर दिया अपने, लेजेंडरी स्टूडियो, मतलब हम बात करें पिक्सार के लेवल पे, और उसने फायर कर दिया, लिटरली फायर कर दिया पूरी टीम को अपनी। और दे वर क्राइंग, डॉक्यूमेंट्री है। और जब उसको ऑस्कर मिल रहा था तो जितने एनिमेशन इंडस्ट्री के थे ना, उसमें ना तुम देखा होगा एक टाइम ऐसा, जो लाइफ ऑफ पाई थी ना, उसके बाद ना फेसबुक पे कुछ लोगों के ना यहाँ पे डीपी पे ग्रीन सिंबल बना हुआ आ गया था, लाइफ बिफोर VFX एंड आफ्टर VFX। तो दे वर सेइंग दैट कि रिदम ने इसको बैंकरप्ट करा दिया एक फिल्म में। वो भी ऐसे लोग रो रहे थे बाहर बैठ के, ऑस्कर मिल रहा था। और सबसे बुरी बात ये लगी, उसने डायरेक्टर ने अपनी स्पीच में एक थैंक भी नहीं बोला रिदम न्यूज़ को कि इस फिल्म की वजह से ये हम लोग कर पाए, थैंक्स भी नहीं था उसका। दैट डायरेक्टर, मतलब जो उसका ओनर था रिदम न्यूज़, डायरेक्टर्स ये सारे जो ये वाले जितने भी डायरेक्टर्स हैं, हाँ, चाहे जेम्स कैमरून हो या कोई, they are मतलब they are psychic when it comes to work, but they are bad human beings. एग्जैक्टली, ये फैक्ट है। They are bad human beings. अरे मैं वही तो कह रहा हूँ सर, मतलब आप ये समझिए ना। आप ये इनको बच्चों को सिखाइए, अभी तो क्लास करो, फिर हम फोन पे बात करेंगे। डन सर, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है ठीक है ना, थैंक यू सर, थोड़ा पैशन और ज्यादा, ठीक है, आप खतरनाक इंडस्ट्री में हो, सिंपल इंडस्ट्री में नहीं। ओके सर, फाइन, थैंक यू सर। हाँ जी बिल्कुल, क्या समझ में आया? तो लेट मी शो यू डॉक्यूमेंट्री टुडे। Of course, I brought all the biscuits and यहाँ का water on the क्या raft कहते हैं, with थोड़ा me सा to मतलब keep them नेटवर्क safe. इशू हो रहा है, इस वजह से नहीं कोई है। प्रॉब्लम नहीं। देखो, देख रहे हो लाइफ आफ्टर पाई, देख रहे हो? हाँ, वॉच दिस डॉक्यूमेंट्री टुडे, यू नीड टू सी दिस। वही है ना, देखना एक बार, hundreds of thousands of middle ठीक है? मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ इसकी। से इंडिया का नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो कुछ नहीं, से इंडिया का नाम लिखा अरे हुआ तुम देखो ना बेटा, इसके 2 ब्रांचेस थी, एक लास वेगास में थी और एक यहाँ पे थी बॉम्बे में, रिजर्व न्यूज़, फिर हैदराबाद में भी थी। है। ये मूवी ओजो,
11 दिन बाद bankruptcy, 11 दिन As बाद people, उसके we बाद very था, naturally फिर 11 focus दिन पहले bankrupt हो on गया था। changes of events, deltas, or हाँ, एक endings. फिल्म के लिए। And a lot of people एक look studio at था। 25 years and then we got a business in year 26. And it's kind of like, well, what did they do wrong? उनको पैसे Is से the नहीं question, right? Like, देखो प्रॉब्लम ये था कि टेक्स इतने आ गए, उनको एक बजट मिला था कि इस बजट फिल्म बनेगी, अच्छा ठीक है। अब क्या होता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसमें रिटेक्स नहीं आने चाहिए। जितना रिटेक आएंगे उतना काम दोबारा बढ़ेगा, काम दोबारा करना पड़ेगा yes, sir. और उतना खर्चा होगा। तो इवेंचुअली ये बात आ गई थी कि टैक्स इतने आ गए कि वो लॉस में चले गए, पूरी कंपनी बर्बाद हो गई। I'm sorry, 25 years, what did we do right? What do I love about Rhythm and Hues? Mostly the people. It's not corporate. It's very familial. We moved into our first house, my husband and I, because my husband worked here too. John Hughes was one of the people who helped us move our stuff. I think our first contract was actually a film logo, so that was back in 1987. The computers weren't all that fast. And then there was no way of outputting it, so we had to shoot it to film. We were just trying to get something, anything to keep us employed and being able Yes, to pay sir. each other and make computer graphics. Watch the document. I think the majority of the unifying factor was that You we need to see this. This is saw the biggest reality. character animation as kind of a I'm long-term not future. demotivating you, but I'm telling you the reality. I look at some of the work we do, and He cried. I just don't know how we do it. You know, to me, it's just magic. The work that goes into the tiger or some of the other things we do, it's just, it's beyond belief. As an animator, I just like the creativity of it. I can take a blank slate and create a performance out of nothing. They're like, concert musicians, concert pianists that are playing at the LA Philharmonic. They're at the top of their game. We're at our peak, our pinnacle. It's so exciting. All of us, I think, at the end of the day, are driven to create. And that's what really gets us excited and what drives us. The challenge with that is that in many cases, that can take over, or at least it can cloud your judgment. You're going to put in extra hours because you want to go the extra mile, and you're going to try to push things as far as you can as an artist, even if the project and the money for that project do not require or facilitate that happening. Nobody's doing this for the money anymore. Maybe they were at some point. Nobody's doing this for the money anymore. Maybe they were at some point, but they're not doing it for the money anymore. People are doing it because they love doing it, which is why I do it. It's not done by the computer, it's done by a lot of people, and there's a lot of people in the background working away night and day to get the projects done. We as visual effects artists and as visual effects companies do not participate in the profit of any of those films. The visual effects business is a broken business model right now. The only people who thrive in this industry, in the movie industry, seem to be folks who have profit participation. At the beginning of 2012, we knew that we had to raise money. I made 4 trips to China. I visited Taiwan a couple times, Hong Kong a couple times. I hired an investment banker. You hear little rumors, you hear things in the hallways, little whispers. Have you heard this? टैलेंट की बात नहीं है, बात है हक मानने की। हक। और सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे बड़ी बात ये हुई, एक बंदे ने पूरा एक स्टूडियो खड़ा किया था, और यार ये बात नहीं हो रही कि गली के नुक्कड़ पे एक स्टूडियो है। ये वर्ल्ड वाइड नंबर 1 स्टूडियो था। अरे ये नंबर 1 स्टूडियो था वीएफएक्स का, वर्ल्ड का। ये बैंकरप्ट हो गया।
Have you heard that? It just gets your mind reeling, like all the hypotheticals of what could be going on, but you don't know. 20 months of delays at between 1.2 to 1.6 million per month. That's anywhere from 24 to 30 million dollars of additional costs that we had to take on. Other projects were supposed to take the people onto that project, and that project got delayed, and all these projects getting delayed puts you in a really, really bad situation. You know, I was prepared to sell my shares of stock for $1 if somebody would invest the $15 to $20 million that we needed. And then we had investors standing by who fell out at the last second. We even had wire transfer information, bank account information, saying, here, give us the bank account, we'll submit, wire you this money by Monday morning. And over the weekend, we're like, okay, great, this is good, we're gonna get the money in because everything's been signed. And come Monday, the money just didn't show up. And then we went bankrupt. समझे? मतलब क्या हुआ इन लोगों ने अपने स्टॉक्स वगैरह बेचने पे आ गए थे फिर इनके बात चली कि हमको कहीं से पैसा आ रहा है. It's not to make the studios out to be the bad guys or anything like that. It's just the model of how we have set up this business is flawed. We bill 500 shots, say, for $10 million or so. And that's what it is. We'll hire up based on the contract, and then sometimes things just change. The making of a movie is not a precise science. There are creative issues in a movie as it's being done. During the post-production process, and sometimes even during shooting, the movie starts to evolve. If the movie extends and we suddenly have to work for 3 months more or 4 months more, from the studio's perspective, they paid us $10 million for 500 shots. But from Rhythm and Hughes' perspective, now we're paying for the same artists for 3 more months that we have to continue paying their salaries. There's no other source of revenue other than coming out of Rhythm and Hughes' own pockets. So our choices were to cut people's salaries or to lay off a significant number of people or to work people overtime without paying them for overtime by restructuring their contracts. So those kinds of changes are very difficult changes to make, and I felt that any one of those would have so dramatically altered the culture of Rhythm and Hughes that they would have destroyed Rhythm and Hughes. And, well, instead we're in bankruptcy, so I ended up destroying Rhythm and Hughes anyway. So, maybe I should have done something along those lines in order to have tried to preserve Rhythm and Hughes. उसने सैलरी लोगों की नहीं काटी, उसने कॉन्ट्रैक्ट लोगों की नहीं खराब की, उसने बोला ये नहीं कर सकते, चलो ठीक है. We've had to chase a price point that's been dropping very rapidly. And the reason the prices have been dropping quite a bit, one of the fundamental reasons really is the tax subsidies that are being provided in Canada and the UK and other places. If a studio decides there's a $10 million project that they want to take over to, say, Vancouver and award it to a Canadian company, the Canadian company will bid it at $10 million, but the studio gets, say, $3 million back as a tax rebate. So the only way you even get considered for that film is to bid it at $7 million. And so we're now getting less money for the same amount of work. And so the motion picture studios told the visual effects facilities that if you want to get this work, you have to do it in Vancouver, where you're spending $1 million, $1.5 million building a facility there. So, and of course, what happens is another country or region, state says, oh, well, that's a good idea. We'll do that. We'll take our money and we'll take it from our taxpayers and we'll give that to the movie studios. And then, of course, all those people now go to this other place, because what the states and the countries don't realize is every movie they take a look at what's the cheapest place. So you move to Vancouver, find a house, live there for about 9 months or a year, and then ultimately wind up getting laid off. It is good to be in LA.
This is one of America's economic engines. Hundreds of thousands of middle-class jobs. There's still no better place to make movies and television and music than right here in the United States. Entertainment is one of the bright spots of our economy. And that means that we've got to do what it takes to make sure that this industry and every great American industry keeps that competitive edge, so that more folks can find career paths like many of you have and get good middle-class jobs that allow you to support a family and get ahead. I live the life of what some of my comrades that started a Facebook page called the Pixel Gypsy. You know, and it's not that I've never been good enough to land somewhere for the duration, it's that there never is a duration. I've been on the staff of 5 visual effects shops that were really well known, did amazing work, that all went bankrupt, most of them owing the artist money. You know, you're constantly on the go, chasing which government's going to give the greatest handout back to the studios. I've taken to just living in hotels the past few years, find it's a lot simpler. I got suitcases that were designed to fit in the trunk of my car, and it all layers in there. Yay, VFX. I got a king-size bed. I got a jacuzzi in my room. I have those little soaps that make me feel like I'm on vacation every day, and I love using those little soaps. I love the way they feel when you open them up. Rhythm and Hues was like a new girl in my life. I fell in love again. You know what I mean? Then at a Friday meeting, I had my heart broken, just like I have a million times. And now I'm just this kind of strung out, gray-haired old bachelor. People want to have lives and families and houses, and just like anybody else. They're not trying to live rich. They're just trying to live their lives. And you can't do that when you have to live in a different city every 6 months, because you're as the studios chase the tax incentives, a group of artists have to follow. I don't think the studios want visual effects companies to go out of business, because they have a lot of work that needs to be done, and they want us to be healthy. However, they, like any other person that has a job, they're given a budget, they're given a movie, and that you have to do this work for this amount of money. Remember, this is a fixed bid. You absolutely cannot charge us more than the fixed bid. You said there were some changes to the boards. What VFX are involved? The additional shot has beautiful running footage of a car driving across the salt flats. The car then turns into water and morphs into 7 unique animals, all made of water. But one is made of fire. That may be a little more than we bargained for. This is a fixed bid. A fixed bid would be you bid the work, and then no matter what the work is, that's the price that you get. Filmmaking nowadays is very much a fluid situation. The shots change dramatically. You know, easily half of the shots that we bid could disappear and be replaced by other shots. You know, this is the filmmaking process, and it's really difficult to go in and know exactly what you want. Most construction that you see, most houses, skyscrapers, airports, they're built on a fixed bid, which makes sense because there's a blueprint where everything is laid out down to like every screw, every I-beam, every piece of glass. People always compare it with building a house. You know, if you go to an architect, you want to make the changes. Well, if you agree to a plan and you lay the foundation to your house, it's going to cost you to rebuild that house. In visual effects, it doesn't work that way because we're not paid by the hour that we work. We get paid by the completed project. If shots change, if they are lengthened, if they're shortened, if you add characters, you can ask for an overage. But unless we can prove to the studio that there were additional shots, or that there was in fact a very clear change of direction on the part of the director, you know, we just don't get much in the way of overages. Now we've got this fixed price, you know, this fixed price bidding model where there's a fixed price, and the director just doesn't even have to really be there because the visual effects artist can just do it over. The art of filmmaking seems to have changed a little bit over the years. It used to be that you'd have a script and you'd storyboard it and you'd have all 3 acts and then you'd go out and shoot. But nowadays, they often start shooting without really knowing what Act 3 is going to be. And, you know, it's really hard to have a fixed bid and a fixed deadline
when the studio and the director haven't even agreed on Act 3 yet. It's like getting in the car to drive somewhere and you don't know where you're going. You're like, well, do you have enough gas? Well, I don't know. I'm just driving. When you're creating these huge fluid dynamic simulations like we did on Life of Pi, and they want to change this wave from going that way to this way or make the rain go completely differently, that's a lot of simulation time just to make the change. And then finally it gets shown to the client who says something like, why is it even raining in this shot? It's not supposed to be raining in this shot. So now we go back, we do that work that we think we're supposed to be doing, we present it again, it goes back up through the chain of approvals, decision maker sees it, they give their feedback, then it goes back through the chain, the other direction, and we find out whether or not we're done or if we have to keep going. And we understand that if you have a vision and you're moving toward that vision, but as long as you're moving in the same direction toward that vision, that's fine. You know, we're going to get there. But what we see often is that, you know, they'll be heading towards a vision, and you might be heading toward that vision for 6 months, and then all of a sudden they turn around and they're heading off in an entirely different direction. If you're not a visionary, or if you don't have a visionary involved in a project and relies heavily on visual effects, it's not going to succeed. The studios would not permit a director to shoot for a week or two on set and then say, tear down the set and build a new set. You know, that simply wouldn't be tolerated because in the live action portion of filmmaking, everything is paid by the hour. Pretty much everybody who's making everything happen on the movie set, it's by the hour. So the meter's running, the focus is dynamic because it makes the director and the decision maker, whoever that person is, usually it's the director, has to be there. And there's someone telling them every second what the meter's at. And the creativity just rolls because everybody's so focused and the decisions are being made in real time. But when you remove the decision maker from the process, which is what happens in visual effects, the artist ends up getting to version 15, 16, 20, 30, and the client's never even seen it yet. You know, if the decision maker was wandering amongst the midst of the visual effects artists like they do the movie set, if there's ever a platform where that's needed, it's in visual effects. It was a Friday that they told us that our paychecks were going to be delayed. John announces to everyone that we're going to be late on payroll. Been here long enough to know that that was the last thing John would ever want to do. And that's really when it hit home that you knew how bad it was. It was like a perfect storm of crap happening all at the same time. We've come close to hitting a wall in the past, but I think we've come close enough times that there was this sense of things will be okay. And this time was different. My phone starts ringing at like, I don't know, what, 8:30, 9 o'clock at night. People freaking out because apparently managers are now calling people and telling them that they're being let go. 9 p.m., Sunday night, all of these posts. Facebook has probably the best information about what's going on. Just going down the news feed. You've got people being let go at every single level up the chain, you know, from like custodial staff all the way up to, you know, high-end visual effects supervisors, people who have been with the company in some cases for like 17 years. It is completely shock. And then staying up all night, texting, emailing friends, calling friends, not knowing if I'm about to get a phone call. Mentally preparing for that. It's like, it's 9 o'clock. I'm like, how late? Is it going to go until, is it midnight? Do I go to bed at midnight? Do I go to bed at 1 a.m.? Do I stay up until 2? Monday morning, we had our coordinators running around, and what they would do is they would go to people's desks, see if they were there or not. If they were there, then they had to find out if they were supposed to be there, or if they just hadn't found out that they'd been cut. And that was just like a punch in the stomach. Sad to see all the empty seats. Didn't get any work done that day. And the entire time you're going like, well, why that person? Why this person? Why is that person still here? Why is this person gone? That guy was sitting next to me, and he's gone. Why am I still here? For me, this workplace and my job, it's all about my interaction with other people. And my best friends in my whole life I've met here at Rhythm, and people that, you know, I'm very attached to, you know, and so it's very sad
I didn't really expect it to hit me as hard as it did, you know. It's still hard to talk about. I asked him today, I said, John, how are you doing? And he's really, really sad. He's very, very sad that we're in bankruptcy. He's really sad about how many people are going to be affected by this. And I feel sad for that. You know, we run this company for the people, and then to have hurt them so badly. It's really the antithesis of what we wanted to do. You know, 2012 was a great year for movies. Hollywood shattered box office records with $10.8 billion in domestic sales. In fact, studio accountants have never had to work harder to prove nothing made a profit. Life of Pi is the most rewarding experience I've had since I started working in visual effects. Now, this is going to be a big night for some of you people because, as we all know, winning an Oscar guarantees a long, successful career in the industry. To have 2 nominations for the company was incredibly exciting and validating. And on the other hand, full of irony. The company was shattering at the same time that all of this recognition was being heaped on us. So the night of the Oscars, what a mess. देख क्या हुआ था ऑस्कर के टाइम क्या हुआ था डेमोन्स्ट्रेशन दौर से बाहर 5,500 लोग खड़े थे बाहर ऑस्कर्स के बाहर चले गए. This has been a very dramatic juxtaposition of being up for 2 Oscars and declaring bankruptcy at the same time. And the Oscar goes to Life of Pi. Having worked on this for many years, I wanted to thank some people, and I thought that was very important. To our director, Ang Lee, you were an inspiration, and you made it an incredible journey for all of us. Everybody had this little bubble of, hey, look at this, we did it. And then this odd slap in the face. 45 seconds in, I started seeing the red flashing light in the back saying, you got to wrap it up. And then when they started playing that stupid Jaws thing, it was just insulting enough. I mean, in any other year, that might have been actually kind of funny. To my children, Christopher, Thomas, Alexander, and Samantha, thank you for inspiring me every day. For my mom and dad, thank you for telling me I could do any crazy career choice I wanted. Finally, I want to thank all the artists who worked on this film for over a year, including Rhythm and Hughes. Sadly, Rhythm and Hughes is suffering severe financial difficulties right now. I urge you all to remember. Bill gets, completely jawsed off stage. It was emblematic of something that is wrong with this industry. I don't know how they felt about the protests going on. Maybe they didn't want anything to be said about that. I really don't know what was at play. If I can get the phrase being sharked into the cultural lexicon, I think that whole experience would have been worth it. इसको होते हैं इंसल्ट. जॉस का थीम बजा दिया 4.44 seconds. ये बोला लाइफ ऑफ पाई का दिख रहा है. इसको अच्छे without music. And then to top it off, you've got Claudio, the cinematographer, and Ang Lee not thanking the people who really did about 75% of the movie. I cannot make this movie without the help of Taiwan. My Indian crew, my Canadian crew, Tom Rothman, Jim Gemnopoulos, Gil Nader, David Womack, David Lee, my agent Karen Sage, and lawyer Ira Streck, and Joe DiPaolo. I have to do that. Unfortunate is not a strong enough word, but it was. However, look at what it did. It galvanized an entire industry. Ironically, I think the fact that the mic got cut off has done better to get the message out to the public than had I actually said it on the stage that night. It gelled the entire VFX community into being horrifically pissed off at how they were being treated. It's a catalyst for the change in this industry that's going to put it in the right direction.
Hi everyone, it's David Begnaud and this is Newsbreaker. Hop on your social media account and you may be seeing green. People are swapping their profile pictures into green squares, like a green screen. It's all in solidarity with the visual effects industry. T. Christie tweets, if you see a bunch of VFX artists with green icons on Twitter and Facebook, we're just showing folks what movies look like without us. We've got some fantastic conversation happening. You've got people who are getting little green screen pins to wear, showing that they at least support the idea of having these discussions, even if we don't necessarily at this point have a clear vision of what the answer is. A lot of articles come out that sort of try to go through and figure out, okay, what went wrong with Rhythm and Hughes? Rhythm and Hughes had everything going for it. They knew what they were doing. They had international facilities. They were making use of tax incentives. They won an Oscar. What the hell happened? And no one has any clear answers. It's sort of like every one of these articles just kind of rehashes the same stuff over and over again. VFX firms and post houses are like nomads roaming the globe trying to find an economically viable place to be able to work. And it shouldn't be that way because, god damn it, you need us. And when I look into this from the perspective of someone who wants to get into the industry and do VFX work, and I'm sitting back and color correcting my own video or doing a chroma key and thinking about people not being able to be paid for it hurts. If that trend continues, where we continue to do the impossible and we continue to make things extraordinary in a shorter period of time, and we continue to lose money, the visual effects industry will become extinct. Every day, things change in this business. It changes like your laptop changes. The technology changes, the economics of the world change. I've talked to plenty of people who are so affected by this and so hurt and so distressed that they're just going to probably go do something else. I don't consider going out of business after 25 years of producing what we produced, I don't consider that a failure. Quite the contrary, I consider it a success. And I think that people need to have a little more appreciation for how difficult it was to stay in business as long as we did. Visual effects and animation is a business. It's show business. And artist or whatever it is that your vocation is here, it's still a business. The people who are artists will always be artists, and no one can ever take that away from you, right? Nobody can ever say, oh, well, we're gonna shut this business down, so you're no longer an artist. No way, I'll always be an artist. You can never take that from me. It's the process. You have to enjoy what you're doing. And I did. I enjoyed it very much. सब कुछ छीन लिया पर वो आर्टिस्ट का टाइम नहीं छीन सकते जैसे डॉक्टर से डॉक्टर नहीं छीन सकते वैसा आर्टिस्ट का आर्टिस्ट नहीं छीन सकते Oh, and I need your badge. And then I'll take the pages that you needed to sign. इंडस्ट्री के टॉप आर्टिस्ट थे उनका एक टैग रह गया Following bank resumes was sold to action outside the investor continues to forge ahead and see certain industries of the VFX industry. Today, the action and collaboration artist, executive producer, politician can shape a new Hollywood that is sustainable for all. इसलिए इंडिया में थोड़ा इजी हो गया है क्योंकि अब इंडिया में थोड़ा सोचते हैं इसको रिगार्डिंग थोड़ा दिमाग लगाते हैं पैसा कैसे कर देते हैं हम पहले बोलते हैं एडवांस चाहिए समझ में आया तो बेटा देखो ये विपुल समझ में आया बेटा क्या हुआ